Jyoti, are you here? Hello? Jyoti, am I audible? Yes, sir. Okay. So I think we should start. We are already at, it's 2 p.m. So we should start. Let the other people join. Okay, sir. Good afternoon and warm welcome to the distinguished speakers and participants. Myself, Jyoti Pasi, Project Executive SAIARD, on behalf of South Asian Institute of Advanced Research and Development. My heartfelt gratitude to all the delegates for accepting the invitation and joining us in this national level symposium on the philosophical perspective of national education policy. This event has been organized by South Asian Institute for Advanced Research and Development in association with and sponsored by the Indian Council of Philosophical Research, Ministry of Education, Government of India. For very first, I would like to invite Vishwajit Roy Chaudhary, sir, the chairman of SAIA, to address our panelists. Over to you, sir. Thank you, Jyoti, and thank you on behalf of South Asian Institute for Advanced Research and Development. I heartily welcome to all the delegates, our resource person, especially Professor Sanjeev Kumar Sharma, sir, Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Pankaj Mittal, ma'am, Dr. Professor Alok Chakrawal from sir, and also Dr. Pooja Vyas from ICPR and Dr. Professor A.D.N. Bajpayee, sir, from Bilashpur, for accepting our request and invitation and to deliver the lecture on this national education policy. The as I will also be happy to see the participants from the different institutions, the scholars and students, those actually who will be the torch bearer in future of education. So this conference symposium, I think, will be very helpful, and you will be happy to know on 16th of October we have started the inauguration through the inauguration program of this national symposium, where the vice chancellor of from Dr. Sagar Ghosh, Professor Nilima Gupta ma'am, has joined from the Hari Singh Sagar University as well, and the session has already presided by the honorable chief guest, our former education minister, Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank sir. So, and also UGC Deputy Secretary ma'am has joined on behalf of this Eastern Women Center of UGC, and along with the other professors from the different other universities too. So I would not let discuss in a more about the national education policy, because we would like to listen from our honorable delegates. But I would like to mention some points about the SAIARD. That SAIARD, from the very beginning of our institution, we are working closely in case or in the mode of capacity building activities, and in that sense community development perspective, and how to apply the academic initiatives through the for the development of the livelihood as well as the community participation. And our institutions, we are an independent and autonomous research institutions, and though we are associated with the of an university of West Bengal, that is the Vidyasagar University, for doing some certificate courses, diploma courses, and along with that, our faculties are also engaged in the different research-based activities. And not only that, we are also associated with the several Government of India organizations from the very beginning of our platform. That is the Ministry of Jal Shakti, Ministry of Art Science, IMD, Mausam Bhavan, along with the Ministry of Urban and Housing Development Corporations, and the different ministries are we are associated, and we are working closely in collaboration with the training, capacity building, as well as short-term workshops as well. And through that, you will be happy to know we are also as our faculties has also published some valuable research papers in the Scopus Index and international reputed journals as well. Similarly, we are through our training programs, our students has already got the job opportunities in different industries, either in West Bengal or in other parts. So it's just one kind of support and the vision of NEP to make our India Atmanirbhar as well. And you will be happy to know, and I would like to share the recent information that yesterday from Kathmandu University, they are interested, showing their interest to sign an MOU with us, and also SARC Cultural Center
they are also showing their interest to associate through an MOU. And already though we have organized some programs with them. And recently we have signed MOU with the Russian embassy for future collaborations in future. And I think that is the platform through which we can incorporate and we can connect the people, the students, future generations, as well as the faculties, as well as the professors like you and the torch bearers of our society, like the vice chancellors, academicians, eminent academicians. And through our platform, we are continuously doing lots of such academic programs, and in more than 200 academic programs we have conducted, and there are several participants throughout not only India but throughout the world they have joined. And we are trying, these are our vision to promote the visions of the government of India, to promote the vision of this NEP as well in front of the world. And along with that, along with this program, so the livelihood support, livelihood development initiatives is also our prime motto. So in that sense, our students are also engaged with the several industry-based project and government-based project as well, and for their livelihood sustenance along with their learning. So these are a small brief I have just kept in front of you, and also hopefully in future, with your guidance, our institution, our students, our scholars can also be grateful to you if you can also suggest through your lecture. Along with that, we will be happy that if your guidance can also support us in future for further any collaboration as well. So with this, I once again thanks to the honorable resource persons here and the participants and my team for organizing this event. Thank you. Over to Jyoti. Bande Mataram. Thank you so much, sir. So proceeding further, I would like to call our first guest, Dr. Mrs. Pankaj Mittal, Secretary General of Association of Indian Universities, is the second Women Secretary General of the association in its 97 years of existence. She is also the Chief Commissioner Guides of Bharat Scouts and Guides. Dr. Mittal introduced a series of innovative practices and reforms as the Vice Chancellor, not only the rural, residential, multi-faculty women's state university of the country, imparting education to 7,000 girls from KG till PhD level in the holistic manner. She is also the recipient of awards and honors like Fulbright Nehru Scholarship Grant for Educational Administrators, President Award in 2017 for Digital Initiatives in Higher Education, and many more. Ma'am, I would like to invite you to speak few words. Over to you, ma'am. Okay. Thank you, Jyoti. Thank you very much. And thanks to SAIARD, especially Mr. Roy Chaudhary, for inviting me here and giving me an opportunity to speak to all of you. Now, the conference is on philosophical aspects of national education policy. Now, philosophy, I don't talk much about philosophy. I think you have Sanjeev Kumar Sharma ji. He will talk a lot about philosophy. He's a person who is an expert in that area. So let me share with you something about NEP, for which we say that it has the capacity to change the entire landscape of Indian higher education system. So NEP is something which is really going to change the entire higher education landscape, because it is very innovative, very forward-looking policy, a very, very democratic policy. When I say democratic, because when the policy was being formulated, something like 2 lakh persons were consulted for writing this policy, and they were not only the academicians but right from the panchayat level till the highest level. So many people were consulted in writing this education policy. So this is the most democratic policy we have, and if implemented in letter and spirit, but that if is very big, that if implemented in letter and spirit, it has the potential to make India a wish guru once again. So there are many, many aspects of national education policy. I'll only talk about some which are directly impacting the students, because students are the main stakeholders in the higher education system, and the teachers are the one who will be sort of that change. They will work as the change agents. The teachers will be changing the entire landscape.
based on the recommendations of the NEP for the students. So therefore, I will not go into regulatory reforms like HACCI and NRF and all, or the university level reforms regarding, say, research or teaching university or abolition of affiliation system. Or so I will only talk about the program level reforms and the reforms which are going to impact the students especially. So first reform which is going to impact the students is that one, of course, the programs will be of 4-year duration instead of 3-year duration undergraduate program, which will in any case be helping the students in having a better employment perspectives and better holistic development of the students. So the students will be learning much more from an undergraduate program than they were learning earlier. And the most important component is of the internship, because in the national education policy it is mentioned that hands-on experience for the students is very, very important. Therefore, every program in every semester should offer internships to the students, but then it is easier said than done. Because when you have to offer internships to the students, you have to have something called, say, internship bank. That internship bank will be having many, many internships from which the students would be choosing. So the universities have to make individual internship banks. Of course, the ICT is working on a common internship bank for the engineering and technology, but for other subjects, no such bank is existing, and mostly the students are running from pillar to post seeking internships. So it is very important that the universities work on internship banks and provide hands-on experience to the students. But what is basically going to change is when I say this policy is a very, very forward-looking policy, I say that for teachers there is a lot in the policy, because they will decide what to teach, how to teach, and how to assess and evaluate the students. So that type of freedom and autonomy is given to the students, teachers. So what to teach means what will be the curriculum. And many times we say that the curriculum we teach in our universities, that becomes outdated the moment student comes out of the university, because there are so many changes. The changes are so fast, the future is changing so fast, that the curriculum which we frame today becomes obsolete in 3 years. So by the time the student comes out, the curriculum is already obsolete. So what to teach, when I say what to teach, of course, the UGC, ICT, and all the regulatory bodies, especially the new regulatory body which will come up, that is one of the verticals of the HACCI, they will be forming the broad curriculum, but then the universities will have a lot of freedom to tweak with the curriculum based on their local conditions and what is relevant for their own universities, for their own students. So therefore, what to teach will be decided by the teachers, not fully, but in a major way. But whatever they are teaching has to be contemporary. It should not be something which, sometimes it is said that there are some universities who are teaching syllabus which was which was updated 20 years back, because the teachers don't want to change their notes. So the notes were there, so they don't want to change their notes. So same notes are being taught, but that will not happen anymore. So what to teach will be contemporary. And second thing, how to teach means what type of teaching pedagogy will be used. Right now, in most of the universities, we are using the lecture method. And when I was the vice chancellor, I used to visit many classrooms, and I used to see that most of the time the teacher was standing with a book or the notes in the hand, and they were not even having the eye contact with the students. And this is the method, and it's mostly a monologue. The teacher is speaking, the students are listening. But the national education policy says that this is not the right way of teaching, and this is not followed in most of the world. And then in Hindi, if I say, in India, the way we teach in that, टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं और बच्चे घर पे जाके मनन करते हैं, और जो बाहर के देश हैं वहां पे बच्चे घर से पढ़ के आते हैं और क्लास में मनन करते हैं. तो कैसे करते हैं? In the sense that in the flipped classroom model, it is the reverse model, the way we teach today. So in advance, the lecture notes are given to the students, the audios are given, videos are given. The videos could be made by the teacher himself or herself, or even it could be videos from the open education resource. There are many platforms like SWAYAM is there, and there are many open education. EPG Pashala is there, which was made by UGC itself.
So they can be given to the students in advance. Students study all the curriculum in advance, and what happens in the class? Only discussion happens, problem solving happens, rationalization happens, reasoning happens, understanding happens. So this is a better way of teaching, which is recommended by the National Education Policy. And then if this is followed, I think the application part of the curriculum will be taken care of, because the understanding will be better rather than the rote learning. I remember that when I was say vice chancellor, I was taking interviews of a physics teacher. So I asked that physics teacher, what is Newton's law of cooling? So in a 1 second, he just defined the Newton's law of cooling. So then I said, okay, this was a teacher coming for the appointment as a lecturer in physics. So when I asked, okay, if I am going to take a bath, I have filled, say, hot water in a bucket, and another bucket is there with the cold water. So but my mother calls me for something, so if I have to go and attend to her and come back, then what should I do? Should I mix the waters or should I keep them separate? When will I get the better water? This the teacher could not answer. And it was a direct application of Newton's law of cooling, but the teacher could not answer because they were not taught that way. So many a times I have seen that the simple application of a particular law, of a particular theorem, of a particular concept is not known to the teachers themselves, then how will they teach the students? So it is very important that when we prepare the teachers, we prepare them in such a manner that they understand. And once they understand, then obviously they will make the students also understand. So how to teach is going to change. And how to teach is not only about flipped classroom model, it is also about personalized learning. So when I say personalized learning, through an example, I will say, suppose, say 3 children are going to they are going to visit zoo to see some animals. And the wall of that particular bada, which we call it, is a bit high. So the one student which is tallest is able to see clearly, the one who is shorter is able to see slightly, and the one who is very short is only able to see the wall, nothing else. So if it has to be personalized learning, we have to give, say, 1 stool to the shorter one, 2 stools to the youngest one, I mean the shortest one, so that all three can see equally. So this will be the personalized learning, that whatever a student wants, that should be taught to them. But then in Indian conditions, we have something, a class of 50, 60, 80, 100 also. So how can the personalized learning be there? So again, there the technology is coming to the aid. By using artificial intelligence, many universities are now resorting to personalized learning. So it recognizes through AI, they understand where a student is standing, what type of content should be given to the student today, and what should be given tomorrow and then day after. So the personalized learning is possible using the technology. So, but then again, our teachers have to be trained on how to use the technology, both for teaching learning, for developing the e-content, for using technology in teaching, and also for assessment and evaluation. Because unless we tell them this, they will not be able to do it. Or if they want to really adopt personalized learning, personalized teaching, they have to learn how to do it. There are many softwares available, but then they have to be trained. So a lot of emphasis has to be given on the teachers training in future, especially on the concepts in which, on the recommendations which we want to implement under the NEP. And lastly, how to assess and evaluate the students. So we have seen that normally it is a 3-hour examination at the end of the semester through which we assess and evaluate the students. And during COVID, we saw that how difficult it was to take the 3-hour examination. Offline, we could not hold because of COVID, and online we could not hold because of many conditions. There is a problem of digital divide. Many universities do not have the require, or maybe even the students do not have the devices or bandwidth, or even the separate space for sitting and giving the examination. So there was a digital divide within the whole country because it is a big and diverse country. So the 3-hour examination, of course, was not possible, but then National Education Policy also mentions that 3-hour examination is not the best way of assessing and evaluating the student. So the best way is to
assess and evaluate throughout the semester, and not through one examination, through multiple ways. It could be group discussions, it could be face-to-face interview, it could be assignments, it could be projects, it could be activities, it could be quizzes, I mean, there are 100 ways of assessing and evaluating the student. So the national education policy again recommends that all these methods should be used for assessing and evaluating. But again, the question comes that we tell the teachers that you should adopt a continuous evaluation method, or you should adopt these many methods for assessing and evaluating. But where are we? I mean, are we training the teachers in that? So the basic thing is that we should be training the teachers for using the new technology, for using the continuous assessment and evaluation technology. So unless we train our teachers, we will not be doing a very, very good for our students. So if we want to implement NEP, teachers have to be trained, students have to be made aware of what is available. Now, you know that the students are not limited to the teacher or to the classroom in which they are studying. So there is a lot of material available in the open education resource in the form of MOOCs courses, which the students have access to. But the teachers have to sort of make the students aware of all these possibilities and tell them that all this is there. And if you use them, you can, I mean, really, if you want to learn today, the only thing which you need to have is passion for learning. So if that passion for learning is there, neither the admission to an institution is a problem, because again, I say in a lighter vein, I tell students, if you did not get admission in IIT, don't worry. The IIT professor will come to your home to teach you at your convenient time on your laptop, because all the lectures by the IIT teachers are available on the NPTEL platform. So that's why I'm saying, if there is no limitation on which teacher is teaching, which university you're studying, which classroom you're sitting in, because now it is the time of lifelong learning. Abundance of resources is there. The only thing which is required is passion of the student, because on the net, everything is available. So my recommendation to all the students who are here, or the teachers who are there, is please take full advantage of national education policy, implement it in letter and spirit, so that all are benefited equally through the policy. Thank you very much, and thanks for the opportunity. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for valuable discussion lectures as well. And I think this policy is one kind of a dynamic changes, will bring a dynamic changes in case of the Indian education system. And along with that, through this policy, after its implementation, students will be mostly benefited. And in that sense, ma'am, you are talking about technology. I am just asking one point, and maybe it's something little bit different from our focal theme of this content. That is we are actually working in the field of geospatial technology, and in that sense, now government has also initiated another policy, that is the National Geospatial Policy. I mean, the DST government of India has also published. So in that sense, we are working from the very beginning of our platform, the application of GIS technology in different domain, either in urban sector or in rural sector, any sector. So yesterday we had a discussion with our faculty teams, and we are looking forward to organize a project proposal. So and you know that there is a few days back we had faced, and the Vishwabharati University here in West Bengal, they have faced some land related issues. I mean, their boundary land related issues, some occupancies are there. So what we are planning, we are looking forward to develop a geospatial database. I mean, the geospatial database of the universities, as well as the land bank management system through this geospatial technology. And is there any opportunity to create that kind of platform where all the universities can develop their land bank and the GIS through the application of geospatial technology, and even each and every building or every unit or towers or their informations will be available in single portal, and where university can also protect their land from other outsiders. Suppose most of the cases, the like the university like Vishwabharati or North Bengali or JNU, they have a huge amount of campus, so somebody they can happen. So if we can design that kind of platform, it will be much helpful for them
to keep the data, as well as the foreign students and the other students can also go through. If they go through this geospatial portal, it will be helpful for them. So you are developing this. You are developing. Okay. Yeah, we are preparing the project proposal on that note. So if you permit, then we can also share it to AIU as a please, because AIU is a large association. We have 916 universities as our members. So we can be speaking to our university members, and we can be requesting them that if you have this information on your website, so that will be good for your university and the reach will be better. Yes, ma'am. If you are able to do it, please talk to us. We will be, we'll be happy to collaborate. So I think, ma'am, we are also starting this pilot taking as a pilot project in Jadavpur University campus, and our students and scholars will prepare a geospatial database map. So the president of AIU right now is the Vice Chancellor. Yeah, Jadavpur University, Shuranjan sir. So that's why we are planning to start, because it's a campus is small, so it will be helpful. And also we are looking forward to prepare this share this presentation to the UGC and AIU as well as that. So thank you, ma'am. And another honorable Vice Chancellor, Professor Alok Chakrawal sir has joined. Sir, namaskar. Namaskar, Chakrawal sir. Ma'am, namaste. Namaskar, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Namaskar. So now I request Jyoti, please go through for our next speaker, Professor S.K. Sharma sir. Yeah, Chakrawal sir. Ek baar dekhiye. Jyoti, your microphone is off. Please, on your microphone. Sorry, sir, for the inconvenience. So proceeding further, I would like to call upon next guest, Dr. Sanjay Kumar Sharma, Vice Chancellor at the Mahatma Gandhi Central University, Motihari, Bihar, former professor and head Department of Political Science, Chaudhary Charan Singh University Meerut, presently General Secretary and Treasurer, Indian Political Science Association. Dr. Sharma has throughout first-class career and has been a National Merit Scholarship holder. He has been teaching political science for more than 34 years. He has published 68 research papers, 16 reviews, 41 articles, 19 edited or authored books, and monographs. Sir, I would like to invite you to speak few words on our today's theme. Over to you, sir. धन्यवाद ज्योति, सबको नमस्कार. मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir, you're audible. चलिए, विश्वजीत को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर यहाँ बुलाने के लिए, सबसे बात करने के लिए. मेरे मित्र प्रोफेसर आलोक चक्रवाल जी यहाँ हैं और डॉक्टर पंकज मित्तल जी यहाँ हैं. दोनों को प्रणाम करता हूँ. दोनों मेरे पुराने मित्र हैं और इस कार्यक्रम में जो भी सब जुड़े हुए हैं उन सबको प्रणाम करता हूँ. पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बात हो, ये अच्छी बात है. और इसके लिए कोई एक नॉन गवर्नमेंटल एक एकेडमिक इनिशिएटिव, ये सायार्ड नाम से जो हमारे मित्र विश्वजीत जी चला रहे हैं, ये सामने आ रहा है. ये बधाई की बात है, इनको मैं बधाई देता हूँ. थैंक यू सर. मैं आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देता हूँ, अगर आप परमिट करें तो. हमारी ये संस्था के तरफ से एनईपी के ऊपर ये हमारा 8वां प्रोग्राम है. बहुत बढ़िया. एंड ये फिजिकली हमने किया. रमेश पोखरियाल जी सर जो हमारे साथ जुड़े थे, वर्चुअली जुड़े थे, बट उनका आना था एक्चुअली, बट काम फंस गए. बट उसने बहुत बहुत बधाई दी, क्योंकि ये प्रोग्राम हमने बंगाल में किए खास करके, और साइयार्ड की तरफ से किए. तो सर ने हमारे पूरे टीम को इनवाइट भी किए उत्तराखंड में. एनीवे, हाँ, इसीलिए मैंने कहा मिदनापुर यूनिवर्सिटी की ओर से आप जुड़े हुए हैं, और वो वहाँ के वाइस चांसलर भी पॉलिटिकल साइंस के ही हैं. मेरे छोटे भाई हैं, मित्र हैं, बहुत पुराने हुए भी. तो बड़ा अच्छा लगा मुझे ये सब देख के. और देखिए, आलोक जी से और पंकज जी से यहाँ इस बहाने भेंट हो रही है. बहुत दिन हो गए इन दोनों से भी मिले हुए, आप सबसे मिले हुए. भाई साहब प्रणाम कर रहा हूँ. नमस्ते. नमस्कार. अच्छा लग रहा है सबको देखकर. मेरे को ये भी अच्छी बात लग रही है कि देखो, जैसे इन्होंने कहा कि अलग अलग संस्थानों से एमओयू कर रहे हैं. साउथ एशियन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपका जो ये काम कर रहा है, ये अपने आप में अच्छी बात है.
और मैंने कहा पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु अभी दो ही राज्य ऐसे हैं जो आधिकारिक रूप से इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहे थे। तो ऐसे में कल मैं श्रीनगर में था राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बात करने के लिए, जम्मू कश्मीर में। तो वहां बहुत तेजी से काम चल रहा है। देश भर में बहुत सारे विश्वविद्यालयों से मुझे लगता है कुछ भी नहीं तो 100-150 जगह मुझे इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पिछले 2.5 साल में बात करने को मौका मिला है सब लोगों से। तो अच्छा, सब लोगों में उत्साह है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सबसे अच्छी बात यह है कि देश भर में लोगों के मन में उत्सुकता भी है, उत्साह भी है, उमंग भी है और एक विश्वास भी है। कुछ लोगों के मन में आशंकाएं हैं, संदेह हैं। अपने लोगों के मन में भी कभी कभी हल्का हल्का कुछ चीजों में संदेह आता है। पंकज जी ने एक विषय पे प्रारंभ किया था, क्या ऐसा संभव भी होगा कुछ मामलों में। हमें पता है वो प्रशासक रही हैं और आज भी प्रशासन में देश भर के विश्वविद्यालयों से उनका प्रत्यक्ष परोक्ष हर प्रकार का संबंध है, इसलिए उनको उनकी समझ हम सबसे अधिक है। और ये उनका बड़प्पन है कहने का कि इसके दार्शनिक पक्ष पर मैं बात कर सकता हूँ, वे इसके प्रायोगिक पक्ष दार्शनिक पक्ष दोनों पर बात कर सकती हैं। फिर भी मैं कोशिश करता हूं इस बारे में कि इसका जो दार्शनिक आयाम है वो क्या है। वस्तुतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब हम इसे कह रहे हैं तो ये सचमुच में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। ये भारतीय शिक्षा नीति, ये नई शिक्षा नीति, नवीन शिक्षा नीति कुछ भी कहा जा सकता था, लेकिन यदि राष्ट्रीय है तो अपने किन अर्थों में राष्ट्रीय है, ये प्रश्न है। मुझे लगता है भारत के वैविध्य को सम्मान देने वाली, भारत की विविधता को एक उत्साह, उल्लास और उत्सव के रूप में विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा के संस्थानों तक पहुंचाने वाली ये शिक्षा नीति है। ये हम तक, आप तक ये बात जरूर पहुंचाती है कि जो विविधता है, ये विविधता हमारी शक्ति है, हमारी सामर्थ्य है, हमारी विशिष्टता है, हमारी विलक्षणता है और हमारा एक ऐसा अवसर भी है सबको एक दूसरे से जोड़ने का, जिसके माध्यम से भारत विश्व भर में अपनी अकादमिक और बौद्धिक क्षमताओं को प्रदर्शित कर सकता है और उसके साथ साथ उसकी श्रेष्ठता के आधार पर विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर हो सकता है। इसलिए यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण काम करती है। मुझे सौभाग्य मिला है देश भर में जाने का, अनेक वर्षों से देश भर में विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में हमारे समक्ष भाषा का प्रश्न बहुत बड़ा रहा है। और ऐसा रहा है कि हम अपने ही देश में अपने ही देशवासियों से अपने देश की अन्य अन्य भाषाओं में वार्तालाप, संवाद, संपर्क करने के स्थान पर एक विदेशी भाषा के माध्यम से बातचीत करते हैं। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति अवसर प्रदान करती है कि हम अपनी क्षेत्रीय कहे जाने वाली भाषाओं के समृद्ध साहित्य की ओर दृष्टिपात कर सकें, उसको अपने विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, कक्षाओं, पाठ्यक्रमों, पाठ्य वस्तुओं, पाठ्य पुस्तकों, शोध विषयों तक ले जा सकें और उनके मन में जो एक प्रकार की हीनता ग्रंथि बैठ गई थी उसको भी कम कर सकें। इसलिए वो तकनीकी पक्षों पर बहुत अच्छी बात हमारे आदरणीय डॉक्टर मित्तल ने बताई हमको, लेकिन मुझे लगता है कि इसके वैचारिक पृष्ठभूमि में ये विचार है कि न केवल मातृभाषा में किसी भी शोधार्थी, विद्यार्थी, अनुसंधानकर्ता, शिक्षक, जिज्ञासु के मन में उत्पन्न होने वाली सारी उत्सुकताओं को न केवल मातृभाषा में संबोधित करने की संभावनाएं अधिक होती हैं, बल्कि वे अधिक स्पष्ट होती हैं, सुबोध होती हैं, सहज होती हैं, सुगम होती हैं। ये बात ध्यान में रखते हुए मातृभाषा के माध्यम से विद्यार्थियों के अध्ययन के साथ साथ स्थानीय कही जाने वाली भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्य वस्तु का निर्माण, शोध विषयों के बारे में विचार और विद्यार्थियों की मौलिक रचनात्मकता और प्रतिभा को अधिक अवसर प्रदान करना, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पीछे एक वैचारिक आधार भी है। इसके साथ साथ शोध के लिए, नवाचार के लिए, जैसा वो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात हुई, बड़ा अच्छा पैसा भारतीय सरकार ने उसके लिए ईयरमार्क किया हुआ है।
शोध की ओर भारत में प्राथमिक रूप से हम विश्वविद्यालयों को ले जा सकें, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज मेरू जिन्हें कहा जा रहा है, वे सचमुच में शोध का भविष्य में मेरुदंड बनेंगी, ऐसा मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि वे मुख्य रूप से शोध और नवाचार पर अपने शिक्षकों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों और अपने पूरे इकोसिस्टम को केंद्रित कर सकेंगी। हम विश्वविद्यालयों में, हमारे बहुत सारे विश्वविद्यालयों के कुलपति मित्र, लगभग हम प्रतिदिन आलोक जी के विश्वविद्यालय में होने वाली क्रियाकलापों को देखते हैं। बहुत सारे कुलपति विश्वविद्यालयों में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वयन करने के लिए अपने शिक्षक साथियों के साथ कटिबद्ध मात्र नहीं है, लग चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं। इसका परिणाम यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की वैचारिकी को उन्होंने न केवल पहचान लिया है, समझ लिया है, और बल्कि वे अपने विद्यार्थियों और शिक्षकों तक भी उसे पहुंचाने में समर्थ हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसके पीछे का दार्शनिक पक्ष इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, वो है राष्ट्रीयता। इस रूप में आज ही मैंने अखबार में बहुत दिन बाद, आप में से बहुत सारे मित्रों को याद होगा, उत्तरपाड़ा का भाषण, तो श्री अरविंद का उत्तरपाड़ा का भाषण आज मैं पढ़ रहा था, और उसमें वो प्रारंभ करते हैं इस बात से कि ये जो राष्ट्रीयता है वो क्या है, और भारतीय राष्ट्रीयता को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं। और वो कहते हैं मेरा तो लालन पालन भी विदेशी वातावरण में, विदेशी समाज में हुआ, उस भाषा के साथ हुआ, लेकिन भारतीय संस्कृति के प्रति, सनातन धर्म के प्रति उनके आकर्षण ने उन्हें आधुनिक भारत में भारतीय संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण संवाहक और वक्ता स्थापित किया है। वो उत्तरपाड़ा के भाषण में ये कहते हैं कि जो हमारा, प्रारंभ में कहते हैं सनातनता ही, सनातन धर्म ही हमारी राष्ट्रीयता है, और उस राष्ट्रीयता को अभिव्यक्त करने के लिए वे भारतीय पूरे ज्ञान परंपरा को चिन्हांकित करते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आज 2020 में प्रवृत्त होने के समय उस भारतीय ज्ञान परंपरा को केंद्र में लाती है। हमारे मन में बैठी हुई एक ऐसी हीनता ग्रंथि कि हम प्रत्येक विषय में उसके जनक खोजने के लिए पश्चिम के समाजों की ओर प्रमुखापेक्षी हों, इसके स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्पष्ट रूप से भारतीय ज्ञान वैभव, ज्ञान संपदा को हमारे ध्यान में लाते हुए यह विचार प्रस्तुत करती है कि भारत में विद्याओं का, कलाओं का और बौद्धिकता का, वैचारिकी का जो प्रसार संपूर्ण भारत में विभिन्न माध्यमों से, लोक के माध्यम से, गुरुकुलों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, शास्त्रार्थ के माध्यम से, काव्य, नाटक, कहानी के माध्यम से, अनेक भाषाओं में, वो केवल संस्कृत में नहीं, वो बांग्ला में, वो तमिल में, वो उड़िया में, वो मराठी में, वो गुजराती में, वो तेलुगु में, वो मलयालम में, सब भाषाओं में जो उपलब्ध है उसे भी विश्वविद्यालयी व्यवस्था में केंद्र में लाया जा सके, इस पर एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति महत्वपूर्ण बात करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की वैचारिकी और दार्शनिक पृष्ठभूमि में एक और महत्वपूर्ण पक्ष है, वो क्रमशः है, श्रेणीबद्ध है, लेकिन महत्वपूर्ण है। हम जैसे लोग जो इस विश्वविद्यालय व्यवस्था में लगभग 4 दशक पूर्ण कर रहे हैं, वे प्रायः इस बात की शिकायत करते रहते हैं कि हमें कोई अकादमिक स्वायत्तता तो सीमित रूप में है, लेकिन शेष स्वायत्तताएं नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दार्शनिक पक्ष उस स्वायत्तता को प्रायोगिक रूप में हमारे समक्ष लाने का प्रयत्न करता है। श्रेणीबद्ध और चरणबद्ध रूप में अकादमिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति न केवल करती है, अपितु उसके चरण भी चिन्हांकित करती है, रेखांकित करती है। एक और महत्वपूर्ण बात, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इन 66 अंग्रेजी के और 108 हिंदी के पृष्ठों को यदि हम पढ़ते हैं तो बारंबार इस बात पर जोर दिया गया है, बल दिया गया है कि जो कक्षा का वातावरण है वो आनंद का होना है, वो सुख का होना है, वो सहज होना है, स्वाभाविक होना है। तो कक्षा के वातावरण को उस पूरे
परिवेश को ऐसा बनाने का प्रयत्न, जिसकी ओर संकेत अभी डॉक्टर मित्तल कर रही थी कि हमारे शिक्षकों की ट्रेनिंग पर, प्रशिक्षण पर जोर दिया जाना है, वो इस प्रकार से कि विद्यार्थियों के साथ उनका संवाद, उनकी समझ विकसित करने के उनके प्रयत्न तकनीकी मात्र ना होकर इस रूप में हो कि वे विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान दें और साथ साथ विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा के संस्थान का भी एक समेकित सामूहिक समावेशी विकास संभव हो। इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात और है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दार्शनिकी इस बात पर भी बल देती है कि हम भारत में विश्वविद्यालयों में, उच्च शिक्षा के संस्थानों में उपाधि प्राप्त करने मात्र को विद्या और शिक्षा नहीं मानते थे। हमारे यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अयोग्य पुरुषो नास्ति कहते हैं, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कोई अक्षर ऐसा नहीं है जो किसी मंत्र में प्रयुक्त ना होता हो। नास्ति मूलम अनौषधम, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो पृथ्वी में उत्पन्न होती हो और किसी औषधि में प्रयुक्त न होती हो। अयोग्य पुरुषो नास्ति, कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो अयोग्य हो, किसी ना किसी काम के वो योग्य जरूर है। योजक तत्र दुर्लभ, दुर्लभ वे लोग हैं जो उसे सही काम में लगाएं। तो यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात पर विचार करती है और इस बात को हमारे सामने लाती है कि देश में विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करने वाले, विभिन्न कौशलों में प्रवृत्त प्रवीण तज्ञ लोग विद्यमान हैं, जो उस क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त हैं, कौशल प्राप्त हैं और उनकी ख्याति भी है। उनके पास तकनीकी रूप से विश्वविद्यालयों की, उच्च शिक्षा की उपाधियां नहीं हैं, लेकिन उनका कौशल, उनका ज्ञान, उनका शिल्प कौशल वह हमारे विद्यार्थियों के काम आ सकता है। तो उसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति वैचारिकी को प्रायोगिकी में लाते हुए यह प्रावधान करती है कि हम उन लोगों को, यदि कुलपति लोग हैं तो वो विश्वविद्यालयों में उन्हें विद्यार्थियों के हित हेतु निश्चित समय सीमा के लिए नियुक्त कर सकें। और हमने, आपने देखा अभी कुछ दिन पूर्व ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रोफेसर्स इन प्रैक्टिस का एक सिद्धांत प्रयोग में लाते हुए सब विश्वविद्यालयों तक भेजा है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने दार्शनिक पक्ष में एक प्रकार से संपूर्ण भारत की राष्ट्रीयता का प्रतिबिंबन करती है, ऐसा मुझे लगता है। ये उसका एक दार्शनिक पक्ष है। बहुत संक्षेप में मैं अपनी बात को आपके सामने रख सका। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विश्वजीत रॉय चौधरी बहुत दिन से मेरे पीछे लगे हुए थे और आज वो मुझे पकड़ पाए, इस बात के लिए भी मैं उनका आभारी हूँ। मैं निश्चित रूप से बहुत अधिक यात्राएं करता हूँ, इसलिए बहुत कम उपलब्ध बहुत समय हो पाता हूँ, उसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ। मैं तो चाहता था आप सबसे मिलकर वार्तालाप करूं। अभी अगले हफ्ते मुझे आना है कलकत्ता, तो आप सब कुछ मित्र जो यहाँ हैं उनसे जरूर मिलूंगा, विश्वजीत रॉय से भी मिलूंगा, आप सबसे मिलूंगा। और एक बार पुनः आप सबको प्रणाम करता हूँ। मेरे मित्र प्रोफेसर आलोक चक्रवाल और मेरे मित्र प्रोफेसर डॉक्टर पंकज मित्तल जी को भी प्रणाम करता हूँ। आप सबको नमस्कार। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आज मेरा साधना भी पूर्ण हुआ। मैं बहुत दिनों से सच में आपको सुनने चाहता था। एंड आलोक चक्रवाल सर को भी एक्चुअली मैं आप लोगों से माफी भी चाहता हूँ, ये मेरे हाथ में भी नहीं था। जब ICPR के साथ ये प्रोग्राम तय हुआ था तब मार्च पे हम करने वाले थे, बट वहाँ के मेंबर सेक्रेटरी कुमार रत्नम जी चेंज होने वाले थे या कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन भी था जिसके वजह से हमें उसको पीछे करना पड़ा। बट फाइनली हमने उसको किए एंड आप लोग इसके सहायता दिए और इसके लिए हम भी बहुत आभारी है, SAIARD की तरफ से भी और अपने हृदय से भी इसमें। तो मैं अभी ज्योति को आग्रह करूंगा कि ज्योति हमारा जो नेक्स्ट स्पीकर है ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर आलोक चक्रवाल जी, उनको बुलाया जाए। Thank you so much, sir, for your words. So our next guest is Alok Kumar Chakrawal, sir. He is a professor of Department of Commerce and Business Administration, Saurashtra University, Rajkot. His present position is Coordinator Internal Quality Assurance Cell, Saurashtra University, Rajkot. He has 22 years plus experience
in teaching to postgraduate and graduates, plus administration in higher education institutions, corporate administration top management, plus PhD and MPhil scholars guiding them. His area of specialization is in management, commerce, finance, marketing, research, etc. He has 3 gold medals in graduation and post-graduation, 4 Best Paper Awards in International Seminar Conference, worked as controller of examinations of the university. He visited countries like USA, UK, Thailand, and Nepal. Sir, I would like to invite you to speak few words. Over to you, sir. Thank you, Dr. Jyoti, for your very humble effort to introduce me. पहले तो संजीव भाई साहब आपको खूब खूब वंदन प्रणाम और पंकज मित्तल जी को भी सादर प्रणाम। और पंकज मित्तल जी का कैमरा ऑफ है, मैं मानता हूँ कि वो मेरी बातें सुन रही होंगी और हमारे लिए वो बड़ी बहन जैसी हैं, हमारे लिए बहुत आदरणीय हैं। और संजीव सर, मैं आपको शुभकामनाएं, जैसे आपने करीब साल भर पहले मुझे दिया था, वैसे ही शुभकामना आपको दे रहा हूँ। और ये बात आप और हम ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता है। विश्वजीत जी, ऐसा है, देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में इसके कई पहलू हैं, पर हम किन पहलुओं को सही रूप में लागू कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और जो 29 जुलाई 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर किया। अभी हम लोग जब 6-7 जून को माननीय राष्ट्रपति जी के साथ थे राष्ट्रपति भवन में, तब मुझे लगता है करीब 450 से 500 इंस्टीट्यूशंस ने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया था और करीब 17-18 हजार विद्यार्थियों ने भी रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था। पूरे देश के विद्यार्थियों को समझने की आवश्यकता है, एंड दिस इज द नीड ऑफ द that now you have the power to create and design your degree, the kind of degree you are looking forward. Earlier the situation was like that whatever subjects are being offered, you are supposed to study that, you are supposed to read that, और उससे आगे आप नहीं बढ़ पाते थे। मगर अब परिस्थितियां बदल गई हैं। आपको मान लीजिए बीए में 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। मान लीजिए सब्जेक्ट में साइकोलॉजी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, ऐसा पढ़ाया जाता है। से फॉर एग्जांपल आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, आप पॉलिटिकल साइंस की जगह आप कल्चर पढ़ना चाहते हैं, मगर कॉलेज आपको ऑफर नहीं कर रहा है। या मान लीजिए आप हिंदी की जगह आप बांग्ला पढ़ना चाहते हैं, कॉलेज आपको ऑफर नहीं कर रहा है। सो नाउ इन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ये फैसिलिटी आपको मिलती है कि एक बच्चा अपनी चॉइस के सब्जेक्ट्स पढ़ सके। Now, the question is that, say for example, you can say that this subject is not available in my university. The student can opt it from any other university within the country, across the country, from Kashmir to Kanyakumari and Gujarat to Arunachal Pradesh. A boy or a girl student can opt subjects from Delhi University, Jadavpur University, Calcutta University, Bilaspur, Chhattisgarh, or any other university. अब बड़ी बात यह है कि ये सिस्टम बहुत पहले से है। क्रेडिट सिस्टम, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, डिजिटलाइजेशन ऑफ क्रेडिट और डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ क्रेडिट्स बहुत समय से चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में, कोरिया, जापान में, अमेरिका में, कनाडा में, बहुत सारे कंट्रीज में। चूंकि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी आप देखिए, तो जब एनईडी का कॉन्सेप्ट आया, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी का, तो एनईडी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले एनएसडीएल ने होस्ट किया था, बाद में उसको डिजी लॉकर पे शिफ्ट कर दिया गया। अब सारा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर होस्ट हो सकता है। जो बच्चे सुन रहे हैं, जो टीचर या फैकल्टी मेंबर सुन रहे हैं, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा और खुशी भी होगी कि आप देश के किसी भी विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। क्या प्रोविजंस हैं? 11 मार्च 2021 को ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने इसका जो रेगुलेशन था वो अपनी वेबसाइट पर डाल दिया था और बाद में उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस भी हुए। इसमें बेसिकली एक स्टूडेंट को होस्ट इंस्टीट्यूशन को चूज करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल आप साइरार्ड का ये कार्यक्रम जादवपुर यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, तो मान लीजिए जादवपुर यूनिवर्सिटी को उसने किसी बच्चे ने होस्ट इंस्टीट्यूशन पकड़ा,
और मान लीजिए उसको 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री के लिए 200 क्रेडिट्स या 180 क्रेडिट चाहिए या 160 क्रेडिट चाहिए, तो उसको उन 160 क्रेडिट या 200 क्रेडिट्स का 30% मिनिमम अपनी होस्ट इंस्टीट्यूशन से करना पड़े. That is the provision. The remaining 70 to 50% he can do or she can earn from any other institution across the country. और इसका इसी के साथ साथ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का भी इसमें इम्प्लीमेंटेशन हो गया. यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में आपका एक बार जब रजिस्ट्रेशन होता है, देन यू कैन प्रोलॉन्ग इट फॉर द नेक्स्ट 7 years. यानी 7 years में आप कभी भी अपने रिक्वायर्ड क्रेडिट्स को पूरा कर सकते हो. और उन क्रेडिट्स को जैसे जैसे आप पूरा करते जाते हो, उनको आप रिडीम कराना चाहो. से फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 साल के बाद सर्टिफिकेट लेना चाहते हो, यू कैन रिडीम सर्टिफिकेट. अगर 2 साल के बाद आप डिप्लोमा डिग्री लेना चाहते हो, ले सकते हो. 3 साल के बाद नॉर्मल डिग्री लेना चाहते हो, ले सकते हो. 4 साल के बाद रिसर्च या ऑनर्स डिग्री लेना चाहते हो, तो इनको आप रिडीम करा सकते हो. तो यानी किसी भी इंस्टीट्यूशन, मान लीजिए जादवपुर यूनिवर्सिटी से बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो उसने मान लीजिए किसी पेपर में 4 क्रेडिट अर्न किए, वो क्रेडिट उसका सीधा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में, जैसे आपका एक ऑर्डिनरी बैंक में कोई अकाउंट खुलता है, खाता खुलता है, वहां आपका खाता खुल जाएगा और आप अपनी पढ़ाई करो. और अब प्रोग्राम के लिए आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आपका रजिस्ट्रेशन किसी भी इंस्टीट्यूशन कोर्स के लिए होगा. मान लीजिए आप कोई पेपर, आप मान लीजिए इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहते हो, या मान लीजिए आप फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट का कोई पेपर पढ़ना चाहते हो. अब आप देखिए, ये चंडीगढ़ में या छत्तीसगढ़ में या बहुत सारे जगहों पर फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट का इंस्टीट्यूट खुला हुआ है. वहां से आप कोई 2-4 पेपर पढ़ना चाहते हो. क्योंकि दुनिया में आज देखिए हर फील्ड में अलग अलग इनोवेशन हो रहे हैं. तो बच्चा जिससे मान लीजिए डेटा एनालिटिक्स के ऊपर, मशीन लर्निंग के ऊपर, IoT के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आप कोई पेपर पढ़ना चाहते हो, आप पढ़ सकते हो. तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको पीसमिल में पढ़ाई करने की अप्रोच है, ये आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप कैफेटेरिया अप्रोच से अपनी डिग्री को डिजाइन कर सकते हो. आप कुछ कोर्सेज एक जगह से पिक करो, कुछ कोर्सेज एक जगह से पिक करो, और फिर सारा उनको कंसोलिडेट करके आप अपनी डिग्री अर्न कर सकते हो. इसमें मूक्स या ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, उससे भी अगर आप चाहें तो 40% तक अपने क्रेडिट्स अर्न कर सकते हो. 40% तक कोर्सेज आप वहां से अर्न कर सकते हो. यानी आप देखिए इससे एक्सेस के कितना बड़ा फर्क पड़ गया. यानी देश के किसी भी कोने में बैठा हुआ बच्चा कोई भी कोर्स पूरे देश में ऑनलाइन और फिजिकल मोड में पढ़ सकता है. तो एक्सेस का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, वो यहाँ रिजॉल्व होता दिखाई दे रहा है. दूसरी चीज क्वालिटी कही जाती है. यानी आप कुछ भी पढ़ाएंगे और विद्यार्थी को पढ़ना पड़ेगा. नाउ दैट इज नॉट द सिचुएशन. अ स्टूडेंट विल गो ओनली फॉर दोज कोर्सेज व्हिच आर क्वालिटेटिव प्रोग्राम्स एंड व्हिच आर हैविंग क्वालिटेटिव टीचर्स. The teachers who are handling and treating those subjects in papers, they are evaluated by their students, and the student will realize if the teacher is good, then the student will continue with the program or the courses. Otherwise, he will quit, will go for the another teacher, will go for the another course. So here the quality matters. आप कुछ भी पढ़ाएंगे और विद्यार्थी पढ़ेगा ऐसा नहीं है. विद्यार्थी उन्हीं प्रोग्राम्स को पढ़ेगा जिसमें क्वालिटी लगेगी. अगर टीचर इफेक्टिव है, विद्यार्थी रहेगा. टीचर इनफेक्टिव है, विद्यार्थी चला जाएगा. सो हियर इज अनदर थिंग दैट यू आर गेटिंग द क्वालिटी एंड द इक्विटी. इक्विटी का मतलब पूरे यहाँ पर जात पात का भेद नहीं है. कोई भी बच्चा किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता है. रुपए पैसे का भेद नहीं है, अमीर गरीब का भेद नहीं है, रीजन का भेद नहीं है, लैंग्वेज का भेद नहीं है, धर्म का भेद नहीं है. देयर इज नो कास्ट, क्रीड एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. सो एवरीबडी इज गेटिंग द एक्सेस टू एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट. और इसके लिए हर कोर्स में, हर प्रोग्राम में 20% सुपर न्यूमरेरी या एक्स्ट्रा सीट्स बढ़ाने की प्रोविजन की बात कही गई है. और अब कई सारे, जब मैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात करता हूं, दिस इज रियल, इन रियल टर्म्स अ काइंड ऑफ रिवॉल्यूशन. आप समझिए किसी भी कोने से बैठ करके आप कश्मीर की डिग्री हासिल कर सकते हैं, आप कन्याकुमारी की डिग्री हासिल कर सकते हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का ले सकते हैं. तो जो इंस्टीट्यूशंस आगे आ रही हैं, जिनके प्रोग्राम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो कर सकते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी है.
और एक बच्चा मान लीजिए जैसा कि फॉरेन कंट्रीज में, कि वहां आपने कुछ पढ़ाई की, उसका एक्सपीरियंशियल नॉलेज अर्न किया, आपने प्रैक्टिस किया। मान लीजिए एक बायोटेक्नोलॉजी का विद्यार्थी है, वो पैथोलॉजिकल टेस्टिंग लर्न कर रहा है, बायोटेक्नोलॉजी का विद्यार्थी, पैथोलॉजिकल टेस्ट का उसने लैब बना लिया, 6 महीने काम किया, कुछ कमाई की, फिर उसको लगता है कि हमको अब माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़नी चाहिए, हमें बायोटेक्नोलॉजी में एडवांस डिग्री लेना चाहिए, तो फिर 6 महीने और पढ़ाई कर लेगा, फिर वो उसको प्रैक्टिस करता है, फिर वो 6 महीने और पढ़ाई कर लेगा। मान लीजिए टैक्स कंसल्टेंट है, वो डायरेक्ट टैक्सेस या जीएसटी के ऊपर 6 महीने का कोई कोर्स करता है, और उसके बाद वो कहता है कि नहीं अब मैं कुछ दिन प्रैक्टिस करता हूँ, टैक्स कंसल्टेंट की तरह काम करता है, जीएसटी फाइलिंग करता है, इनकम टैक्स प्लानिंग करता है, टैक्स कंसल्टेंट की तरह काम करता है, 6 महीने पैसा कमाता है, आ जाता है, फिर आगे पढ़ाई करता है। सो हियर इज यू आर गेटिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग। कुछ भी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, वो पढ़ाई करनी है जिस पढ़ाई से आपका नॉलेज सही में बढ़ेगा और आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग मिले। वो चीजें अब रिडंडेंट हो गई, बेकार हो गई, जो केवल किताबी ज्ञान था, और किताबी ज्ञान से आपका कोई काम नहीं होने वाला है। आप आज की तारीख में डिग्री एक पीस ऑफ पेपर हो गया, अगर आप अपने नॉलेज को डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते हो उसका कोई मतलब नहीं है। एलएलबी करने वाला बच्चा अगर एक जमानत की अर्जी नहीं लिख सकता है, अगर एक बेल एप्लीकेशन नहीं तैयार कर सकता है, देन व्हाट इज द यूज ऑफ हिज डिग्री। तो आपको क्लॉजेस पता होने चाहिए, टॉर्ट्स पता होने चाहिए, एविडेंस पता होना चाहिए, सीवीसी पता होना चाहिए, सिविल प्रोसीजर पता होना चाहिए, क्रिमिनल एक्ट पता होना चाहिए। हाँ, आपको सारी चीजें पता हो, और आपको प्रैक्टिसिंग लॉयर होना चाहिए। आपको ये नहीं कि हमने लॉ की डिग्री ले ली है पर मुझे कुछ अता पता नहीं है, क्या है लिमिटेशन एक्ट पता नहीं है, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो नहीं पता है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको नॉलेज अर्न करना है, आपको अपनी नॉलेज को डेमोन्स्ट्रेट करना है, और वही चीज ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कहता है। मुझे लगता है कि आपने मुझे 15 मिनट का समय दिया था, 15 मिनट में 14 मिनट मैंने बोल लिया है। एक आध मिनट अगर किसी को कोई क्वेश्चन, आप कंटिन्यू कर सकते, कोई इशू नहीं, आप कंटिन्यू कर ही सकते। नहीं हम तो पूरा दिन कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू कर ही सकते, कोई इशू मगर नहीं। एक चीज जो हमें मैंने भी बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, एक चीज और मैं आपको बताऊं, क्योंकि जैसे मैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात करता हूं, हमारे ऑडियंस को दुनिया भर के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं तो अभी कंटिन्यू कर सकता हूं, बहुत सारा बोल सकता हूं, मगर इफ एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू गेट दैट क्लैरिफिकेशन डन इन द बेस्ट पॉसिबल मैन। ये जो हमारे कुछ स्टूडेंट यहाँ पे अभी जैसे जुड़े हैं, तो ये एकेडमिक क्रेडिट बैंक, इनको क्या काइंडली आप उनको उन लोगों के लिए एक बार एक्सप्लेन कर देंगे एक बार? देखिए, एकेडमिक क्रेडिट बैंक नहीं है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। हाँ, वो क्या है कि आपको कोर्सेज में एडमिशन लेने हैं। अब क्या है कि आपने रिक्वायर्ड, आपका पूरा क्रेडिट होता है ना, जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में आपको 8 पेपर पढ़ाए, ठीक है, 4 साल में कुल मिलाकर के आपको 32 पेपर पढ़ाए जाए, ठीक है। अब वो 32 पेपर्स या उसके जो इक्विवेलेंट क्रेडिट्स हैं, आप देश की किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ सकते हो, और वो क्रेडिट आपका जो भी अर्न करेंगे या मार्क्स कह लीजिए सादी भाषा में, वो आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में डिपॉजिट होता रहेगा। और जिस दिन आपके पास रिक्वायर्ड क्रेडिट हो गया, उस दिन आप अपनी होस्ट इंस्टीट्यूशन, देखिए इसमें 2 चीजें हैं, एक तो आपका होस्ट इंस्टीट्यूशन होगा, जैसे मान लीजिए HEI किसी भी यूनिवर्सिटी को आप होस्ट बना सकते हैं। मान लीजिए से फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी को आपने होस्ट इंस्टीट्यूशन बना लिया, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मिनिमम 30% और मैक्सिमम 50% कोर्सेज या क्रेडिट आप कर पाएंगे। से फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं 30% दिल्ली यूनिवर्सिटी से करते हैं, तो बाकी के 70% कहां से करेंगे? बाकी के 70% में 40% तक आप ऑनलाइन रिसोर्सेज से कर सकते हैं, जैसा कि मैंने मूक्स बताया, स्वयं बताया, स्वयं प्रभा बताया, अर्पित बताया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। और बाकी के 30% अगर वो चाहे तो कुछ कोर्सेज वो चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ ले, कुछ कोर्सेज वो कुरुक्षेत्र से पढ़ ले, कुछ कोर्सेज वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी पढ़ ले, कुछ वो तेजपुर से पढ़ ले, कुछ वो पांडिचेरी से पढ़ ले। तो कुल मिलाकर के जब उसको रिक्वायर्ड कोर्सेज पढ़ लेता है या जितना क्रेडिट चाहिए, तो अपने होस्ट इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर मान लीजिए उसने रजिस्ट्रेशन कराया, तो अपनी यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करेगा कि नाउ आई वांट टू गेट माय डिग्री, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को ये रिक्वेस्ट करेगी कि इस बच्चे के जितने भी क्रेडिट्स
आपके यहाँ जमा हुए हैं उसको रिडीम किया जाए और वो रिडीम करके वो सारे क्रेडिट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर कर दी जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब वो क्रेडिट ट्रांसफर होंगे तो उसमें ये सारी चीजें मेंशन होगी कि कौन से पेपर को उस बच्चे ने कहाँ से पढ़ा है, कितनी पढ़ाई की है, कब एग्जाम दिया, एग्जाम में कितने क्रेडिट्स मिले, वो सारा चीज ग्रेड क्या है, ये सारी चीज उसको पता चल जाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने क्रेडिट और बाकी यूनिवर्सिटी के क्रेडिट्स को मर्ज करके उस बच्चे के लिए एक डिग्री बनाएगी और वो डिग्री उनको ऑफर कर देगी। अब समस्या यहाँ आती है कि मान लीजिए आपने कुछ पेपर आर्ट्स के पढ़े, कुछ पेपर साइंस के पढ़े, कुछ पेपर कॉमर्स के पढ़े, कुछ पेपर इंजीनियरिंग के पढ़े, तो डिग्री का नाम क्या होगा? ये एक बड़ा क्वेश्चन आता है। तो डिग्री का नाम जो होगा उसमें जो आपका रेगुलेशन दिया हुआ उसमें बहुत क्लियर कट लिखा है, दिस डिग्री विल बी कॉल्ड बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन, BLE। और आपको बताऊं, गुजरात में गांधीनगर में एक बैंक, एक व्हाट यू कॉल, गांधीनगर में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ लिबरल आर्ट्स का एक करीब 10 सालों 12 सालों से एक काम चल रहा है और उस डिग्री की बहुत ही ज्यादा डिमांड है और बच्चों का पैकेज बहुत ज्यादा है और इसकी फीस भी बहुत ज्यादा है, मैं बता दूं। तो बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन BLE जो है ये बहुत ही बढ़िया एक कॉन्सेप्ट है और अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो टू माय अंडरस्टैंडिंग, जहां तक मैं मानता हूं कि हम लोगों ने अपना एक पूल बनाया हुआ है और हम करीब 10-12 यूनिवर्सिटी मिलकर के उसको अलग से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं PG लेवल पे। मगर UG PG हर लेवल पर ये चीजें आपको नेशनल लेवल पे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बन गया है तो वहां से भी आप अर्न कर सकते हैं। और बच्चा, मान लीजिए आपको न्यूक्लियर फिजिक्स कहीं पर अवेलेबल नहीं है, या मान लीजिए आपको एस्ट्रोफिजिक्स नहीं अवेलेबल है, या मान लीजिए आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं है, दूसरी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करो। पहले तो ये था कि इस यूनिवर्सिटी में ये डिपार्टमेंट नहीं है तो हमें यहाँ भी ये डिपार्टमेंट, अब सारे देश में सब यूनिवर्सिटीज में सारा डिपार्टमेंट्स खोलने की आवश्यकता नहीं है। इसे आप ERP भी कह सकते हैं एजुकेशन का, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, यानी जैसे कंप्यूटर में ERP होता है, यानी पूरे देश के सारे डिपार्टमेंट्स सारे विद्यार्थियों के लिए अवेलेबल है और उसमें बच्चा कहीं से भी कहीं कभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है थ्रू एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो मुझे लगता है थोड़ी और क्लैरिफिकेशन विश्वजीत जी आपको हो गई। एंड एनीथिंग एल्स इफ यू वांट टू से। सर, ये हमारे NEP के ऊपर जैसे आपने अभी अभी बताया कि शिक्षा को हम नॉलेज से थोड़ा स्किल पे भी हम ले आना चाह रहे हैं। जिस विषय के ऊपर हमारा नॉलेज होगा उसको हम कैसे स्किल में, काम में, लाइवलीहुड सपोर्ट में लगाया जाए। तो मैं ये क्वेश्चन आपसे भी करूंगा एंड थोड़ा पंकज मैम से भी करूंगा। मैम, आर यू हियर? आपका वीडियो ऑन नहीं है, मुझे समझ आ रहा है। पंकज मैम, आर यू हियर? या हमारे साथ संजीव सर भी जुड़े हैं। सर, आप आर यू हियर सर? बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ आलोक जी को, कहीं नहीं जाऊंगा इनको छोड़कर। ओके, तो जैसे कि हमारा यहाँ पे NEP को हम एक एंटरप्रेन्योरशिप के मोड पे भी अभी हम अपने विद्यार्थी को देखना चाहते हैं, इवन इन दैट सेंस कि इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी, जैसे हम अब क्रेडिट बैंक ऑफ क्रेडिट के बात बताए, उसमें थ्रू से स्टूडेंट कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ते हुए कोई टेक्निकल सब्जेक्ट क्या कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आपका जियोग्राफी में पढ़ रहे हैं कोई अपना सब्जेक्ट, उसके बाद वो जियो इन्फॉर्मेटिक्स में अपना कोर्स करना चाहते हैं, तो साइमल्टेनियसली वो तो कर ही सकते हैं। और अगर उनको मान लीजिए कहीं पे जॉब मिल रहा है, और जो इंडस्ट्री एसोसिएशन, इसके रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी का क्या रोल रहेगा आगे चल के NEP के थ्रू से, कि एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर भी हमें यूनिवर्सिटी पे एक डेवलप करना, स्किल डेवलपमेंट पार्ट को इनिशिएट करना, इसके रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी का अभी क्या क्या ऑप्शंस रहेगा जिसके थ्रू से हमारे स्टूडेंट भी बेनिफिटेड हो सकेगा। ये फील्ड तो आलोक जी का ही है, विषय भी है उनका और विशेषज्ञता भी है, दोनों है। देखिए सर, ऐसा है कि ये एजुकेशन पॉलिसी पूरी तरह से सर्वांगीण विकास पर आधारित है
और केवल किताबी ज्ञाने नहीं, नो बुकिश नॉलेज, ठीक है। तो स्किल तो अपने आप आएगी, स्किल इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है, और केवल हायर एजुकेशन में नहीं, स्किल तो 8वीं कक्षा से शुरू हो जा रही है। अब आपको बताइए मुझे, एक कुम्हार या पॉटर जो है, ठीक है, कुम्हार का बच्चा कहता है कि मैं कुम्हार का काम नहीं करूंगा, ठीक है, और वही चीज सीखने के लिए वो लाखों रुपए की फीस दे करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में जाता है, एडमिशन लेता है और वहां पर जाकर वो पॉटरी सीखता है। हम नाई का बच्चा है जो बार्बर है, वो कहता है मैं हेयर कटिंग नहीं सीखूंगा, और वहीं हम जावेद हबीब जो है 10,000 रुपए बाल काटने के ले लेता है। कितना लेता है? 10,000 रुपए लेता है। शहनाज हुसैन मैडम कितना चार्ज करती है आपको पता है? अरे आपको मैं बताऊं बड़ी मजेदार बात, हमारे एक मित्र हैं न्यू जर्सी में, अमेरिका में रहते हैं, तो वो वल्लभ विद्यानगर गुजरात के रहने वाले, और मैं राजकोट में रहता हूं। तो आने के बाद वो रुके रहे, मैंने कहा भाई इतना लंबा तू अमेरिका से क्यों आके रुका हुआ है? तो क्या यार मैं वो Is there anyone else speaking? I guess, or am I allowed to speak, Vishwajit ji? Yes, sir, it's okay. Fine. Okay. Now what happened? That guy came from New Jersey, United States of America, and he stayed for long. I asked him, what is the purpose of your this visit? He said, I want to learn hair cutting. मैंने कहा अरे वो पटेल है वहां का, उसने कहा बाल काटना नाई का काम सीखना है। मैंने कहा क्यों? कह रहे यार बहुत पैसे मिलते हैं वहां, डॉलर्स मिलते हैं भाई साहब। तो कहने का मतलब ये है कि भैया आपको काम करने आना चाहिए, डिग्री का कुछ नहीं होने वाला है। और यही तो समस्या थी ना कि भाई चार्ल्स वुड ने जो वुड्स डिस्पैच के नाम से जो उसका लेटर था 1823 में पहली बार उसने लिखा था, फिर 1833 में, बाद में लॉर्ड मैकाले ने उसको प्रोसेस किया। तो चार्ल्स वुड ने जो वुड्स डिस्पैच के नाम से यही तो कह रहा था ना कि 10वीं तक की पढ़ाई जो है आप रीजनल लैंग्वेज में कर पाओगे, उसके बाद आपको अंग्रेजी पढ़ना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि उसको बाबू बनाना था, नौकर बनाना था, नौकरी के लिए। अरे हम पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं करते हैं भाई। आज सवेरे ही मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था, 1980 में एक भाई ने तमिलनाडु से आकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में एडमिशन लिया, उसका नाम था वाशी मलाई, ठीक है। और वहां से पढ़ाई करने के बाद आपको लगेगा नहीं कि हर आदमी जाएगा नौकरी करेगा, उस आदमी ने छोड़ दिया, वहां से चला गया तमिलनाडु। तमिलनाडु जाकर के उसने विलेज डेवलपमेंट एंड फॉरेस्ट डेवलपमेंट का काम किया, एंड DHAN धन फाउंडेशन करके एक उसने बनाया। आज वो फाउंडेशन करोड़ों नहीं अरबों रुपए का फाउंडेशन है, आपको जानकर के आश्चर्य होगा। एंटरप्राइजेस, देखिए आदमी में काम करने की क्षमता होनी चाहिए। और जो अमेरिका का सन 2000 के साल का, आज से 22 साल पुराना इकोनॉमिक टाइम्स में हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का एक रिपोर्ट छपा था, जिसमें यह लिखा गया था कि यूएसए में जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज की टॉप कंपनीज हैं, उनके ज्यादातर सीईओज या थर्ड क्लास MBA हैं या उन्होंने MBA किया ही नहीं, पढ़ाई नहीं की। मुझे लगा धीरू भाई अंबानी कौन से स्कूल से पढ़ के आए थे? ठीक है, बताइए सन फार्मा वाले जो बहुत बड़े क्या नाम है संघवी जी, वो कौन से स्कूल से पढ़ाई करके आए थे? या गौतम अदानी जी ने कौन सा बिजनेस ले लिया है? बिजनेस डिग्री। सी यू हैव टू अर्न द क्वालिटीज। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसीलिए तो कहता है ना कि अप टू 50% इज टू बी एक्सपीरियंशियल लर्निंग। हम क्या था, क्लास में पढ़ाए जा रहे, साल में या 6 महीने में 3 घंटे का एग्जाम ले लिया और कह दिया अब तू पास हो गया। मतलब हाउ टू स्विम, तैरा कैसे जाए, बड़ा अच्छा सा बढ़िया सा स्विमिंग पूल का ड्राइंग बना दिया, बच्चे को पढ़ा दिया कि भैया पहले किनारे पकड़ के दोनों पाँव को हिलाते रहो, छबिया मारते रहो, फिर दोनों हाथ से मारो, 15 दिन में तुम्हें तैरना आ जाएगा। बच्चे ने ड्राइंग बना दिया, टीचर ने जो बताया था वो लिख दिया, और उसके बाद टीचर ने 80 आउट ऑफ 100 उसको दे दिया, राइटिंग देख लिया, डिस्टिंक्शन से बढ़कर लड़का पास हो गया। और जब नदी में गया तो ग्रुप से करके नीचे डूब गया। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं थी, केवल क्लासरूम टीचिंग थी। 2015 का टाइम्स ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि हमारे 75% इंजीनियर्स एम्प्लॉयबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको इंजीनियरिंग का अनुभव ही नहीं था। जब 7, 8, 9 को बनारस में, काशी में, वाराणसी में
अखिल भारतीय शिक्षा समागम हुआ, उसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि लैब टू लैंड तो हम करते हैं, यानी आप कोई चीज वर्कशॉप में, यूनिवर्सिटी के रिसर्च लैब में जो बना रहे हो उसको आप ग्रास रूट लेवल तक ले जाओ। मगर जैसा कि हमारे बड़े भाई संजीव कुमार शर्मा जी ने कहा कि बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जिन्होंने कोई डिग्री हासिल नहीं की। मान लीजिए एक मोटर मैकेनिक है, एक सिविल का काम करने वाला आदमी है, ऐसे टेक्नोक्रेट्स है, या मान लीजिए एग्रीकल्चर के फील्ड में काम करने वाला आदमी है, उसको जो हाइब्रिड बीज बनाने का ज्ञान होगा, वो जो नॉलेज है, वो उसे कोई डिग्री नहीं है, मगर उस आदमी को आप लैब तक लाइए। लैंड टू लैब, लैब टू लैंड तो ठीक है, लैंड टू लैब, यानी ऐसे लोगों को प्रैक्टिस, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बनाइए, उनको ज्ञान को लाइए, उनको पहले अपॉइंट करिए और उनसे सीखिए। ठीक है, जो आईएएस ऑफिसर बनते हैं उनकी ट्रेनिंग क्या आईएएस ऑफिसर करते हैं? नो, उनकी ट्रेनिंग वो आदमी करता है जो जूनियर सीनियर क्लर्क होता है। ठीक है, एक आईपीएस की ट्रेनिंग हवलदार करता है कई बार, या सब इंस्पेक्टर करता है, इंस्पेक्टर करता है, आईएएस नहीं करता। तो जो चीजें आपको ग्राउंड से पता चलेंगी वो कहीं नहीं। तो एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट तो बेसिक बात है इसमें भाई। यू हैव टू बिकम जॉब क्रिएटर, आपको रोजगारों का सृजन करना है। आप केवल कुल जितने जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं उनके केवल 7% ही नौकरियां हैं। 7% में भी टोटल नौकरियों का केवल 1% सरकारी नौकरियां हैं। तो सबको नौकरी कहां से मिलेगी बताइए? तो हर आदमी को कोई ना कोई और काम करना पड़ेगा ना, उसका चाहे वो सामग्री दुकान करे, चाहे वो व्यवसाय करे, चाहे वो जॉब करे, चाहे वो आर्टिशियन बने, चाहे वो कुशल कारीगर बने, चाहे वो अच्छा फ्रेंच फ्राइज की दुकान खोल ले, चाहे वो चाउमीन बेचे। और देखिए बंबई में तो मैं बहुत समय तक रहा, मैं देखता था, बताते थे यहाँ पहले इसकी चाय की लॉरी थी, अब बाद में 5 स्टार होटल बना दिया। कोई बताता यहाँ पंक्चर लगाता था, अब बहुत बड़ा बिल्डर बन गया। तो भैया जिंदगी में अगर चैलेंज नहीं लोगे, अगर साहस नहीं दिखाओगे, तो वही डिग्री लेकर यहाँ वहां धक्के खाते रहोगे। 10-15 हजार रुपए की नौकरी लग जाएगी और चल रहा है, कलर वलर बना के घूम रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी मुश्किल से कहीं लोन लेकर के कोई कार खरीद लिया, अरे जिंदगी फ्रस्ट्रेशन में निकल जाएगी। आपको सीखना पड़ेगा, आपको ये साबित करना पड़ेगा। और राष्ट्र निर्माण तभी होगा, हम चीन को तभी पीछे छोड़ पाएंगे, हम रशिया को तब पीछे छोड़ पाएंगे, हम अमेरिका को तब पीछे छोड़ पाएंगे, जब इस देश का 140 करोड़ नागरिक, हर आदमी राष्ट्र विकास में अपना योगदान देगा और केवल डिग्री के आधार पर नौकरी नहीं ढूंढेगा। अमेरिका में मैं बताऊं, ऐसे लोग हैं जो नौकरी छोड़ करके अपना बिजनेस शुरू कर, और यहाँ बिजनेस छोड़ के नौकरी कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी चलेगा। और कितनी देर बुलवाओगे भैया बताओ? मैं तो अब मुझे ऑफिस जाना है विश्वजीत जी, क्योंकि मैं तो सर, हाँ? आपने एक्चुअली सही बहुत अच्छी बात बताई। इवन भारतीय शिक्षण मंडल के मुकुल कनितकर जी का एक लेक्चर भी मैंने सुना था, यहाँ पे कलकत्ता में हुआ था तब। तो मुकुल जी एक पॉइंट बताए थे कि हमारे जो जब तब शिक्षा नीति का पहले बात हो रहा था, तब उन्होंने एक पॉइंट बताया था जो मुझे अभी तक याद है। जो हमारे देश के जो बच्चे हैं जो फर्स्ट बेंच पे बैठते हैं वो विदेश में जाते हैं, सेकंड बेंच में जो बैठते हैं वो एजुकेशन सेक्टर ऐसे में जाते हैं, और लास्ट बेंच में, फोर्थ बेंच में जो बैठते हैं वो कम पैसे में मंगलयान को, अमेरिका से कम पैसे में मंगलयान को मंगल में पहुंचाते हैं। तो हमें उन लोगों के लिए भी सोचना है। और जैसे हमारा जो नया शिक्षा नीति अभी लागू होने जा रहा है, नया शिक्षा नीति आने वाले, इसको मुझे लगता है डेफिनेटली ये बहुत एक ड्रास्टिक चेंज आएगा। और मैं संजीव सर से जस्ट एक पॉइंट के ऊपर ही डिस्कशन करके जोड़ूंगा। और एक्चुअली वाजपेयी सर हमारा 3:30 बजे जुड़ेंगे, उनका कुछ तबीयत का हेल्थ इशू है, तो उसमें 3:30 बजे आ रहे हैं वहां से। तो सर हमारे जो ये शिक्षा नीति, नया एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो जैसे संस्था, हमारे जैसे संस्था, रिसर्च संस्था, ऑटोनोमस संस्था जो होते हैं, जैसे कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अगर वो प्रोजेक्ट के लिए फंड चाहिए, रिसर्च के लिए फंड चाहिए, वो यूजीसी के पास इतने दिन तक माइनर मेजर के लिए जाता था। तो इनमें ऑटोनोमस या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को क्या कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकता है जो हम जैसे रिसर्च करें कुछ अच्छे चीजों के ऊपर, एंड जिसको देखकर लास्ट सितंबर में आईएमडी ने, मौसम भवन ने हमारे साथ एमओयू भी किया। हमने
फॉग वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर एक रिसर्च पेपर हमने किए हमारे जो फैकल्टी एंड स्टूडेंट मिल के। तो ऐसा क्या कुछ प्रोविजन हो सकता है? निश्चित रूप से हो सकता है। आपने मेरे प्रश्न का स्वयं ही उत्तर दे दिया कि आपने आईएमडी के साथ किया है इस प्रकार का एमओयू, और भी एमओयूज के लिए आप लगे हुए हैं। ये मैंने कहा, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो नवाचार के और शोध के रास्तों को ऐसा खोलती है निश्चित रूप से कि सबको सम्मिलित करती है। जैसे मैंने संकेत भी किया, आलोक जी ने भी उसका उल्लेख फिर से किया कि जो लोग विधिवत रूप से इस शिक्षा के क्षेत्र में नहीं है उनको भी विश्वविद्यालय शिक्षा से जोड़ने का काम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कर रही है। और मैं तो आपसे एक हमारी ये भारतीय राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान परिषद है जो 1938 में बनी थी, मैं तो चाहूंगा जब मैं आता हूँ वेस्ट बंगाल तो उसके साथ भी आपके साथ एक एमओयू करूं और हम लोग मिलकर साथ में काम करें। निश्चित रूप से हमारा एक बड़ा संस्थान है, शोध का काम केवल कुछ संस्थानों या विश्वविद्यालयों तक सीमित ना रहे, वो सबके लिए हो, इसकी व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति करती है। धीरे धीरे जैसे इसका क्रियान्वयन होगा हमारे सबके सामने चीजें ना और साफ होकर आएंगी। धन्यवाद सर, आप दोनों को ही बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी बहुत अच्छा विचार आपने रखे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर, और मुझे लगता है हमारे जो स्टूडेंट्स फैकल्टीज जो जुड़े हैं वो भी बहुत समृद्ध है। अगर आप लोगों की तरफ से कोई क्वेश्चन है तो आप लोग भी कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ डॉक्टर कलाधर सर हैज ज्वाइन। कलाधर सर, आपका कोई क्वेश्चन है? या डॉक्टर शाहू सर जो है? अगर हम अपना नेक्स्ट स्पीकर की तरफ बढ़ेंगे तो आवर नेक्स्ट स्पीकर प्रोफेसर ABN वाजपेयी जी, ऑनरेबल वाइस चांसलर बिलासपुर से। तो वो 3:30 बजे जुड़ेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप लोग हमारे ऑनरेबल रिसोर्स पर्सन को, अगर आपका पॉसिबल है तो आप भी प्लीज उस टाइम पे जुड़े, क्योंकि सर का तबीयत का खराब है, थोड़ा इशू है, बट फिर भी सर 3:30 बजे जोड़ेंगे उसमें। कोशिश कर, हमारा ये लिंक ओपन रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार। और बंगाल में आइए प्लीज, हमारे संस्था में भी आपका एक लेक्चर हम करवाते हैं। और आलोक जी को भी हमारे संस्था की तरफ से इनविटेशन रहा, कभी आप कलकत्ता या बंगाल आएंगे तो प्लीज बताइएगा सर। सबको नमस्कार। थैंक यू।
वाजपेयी सर, आप ज्वाइन किए हैं? सर प्रणाम। जी नमस्ते। धन्यवाद सर, आप ज्वाइन किए हैं। अभी अभी कुछ देर पहले पंकज मित्तल मैम, संजीव शर्मा सर का लेक्चर हो गया, आलोक चक्रवाल सर का भी। चला गया। आपका सर तबीयत कैसे है? मैंने सुना। ठीक ही है तबीयत तो खास नहीं। फिर चला गया। टेप खुल जाती है। क्या टेप क्यों आ रहा है इसमें? कितने बजे शुरू करेंगे आप? सर आप शुरू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अभी आप ही लास्ट स्पीकर हैं जैसे, और बाकी सबका लेक्चर हो गया। शकेत सर सिर्फ ज्वाइन नहीं कर पाए, उनका कुछ इमरजेंसी काम आ गया यूनिवर्सिटी में। कौन बाकी समझे? आज का हमारा लेक्चर में जो जो स्पीकर थे, प्रोफेसर संजीव शर्मा जी, आलोक चक्रवाल जी, उन लोगों का हो गया है। पार्टिसिपेंट्स कितने हैं आपके? पार्टिसिपेंट्स हमारे यहाँ पे तो अभी 14 देख रहे हैं। कुछ लोग ज्वाइन किए थे, वो गैप बीच में पड़ा तो निकल गए, फिर से वो ज्वाइन कर रहे हैं सर। और ये हमारा रिकॉर्डिंग भी रहेगा, तो हम इसको ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू से इसको सर्कुलेट भी करेंगे। चलिए तो आप बुलाइए, फिर आप आमंत्रित करेंगे, हम वैसे ही शुरू हो जाए अपने आप। ठीक है सर।
तो सर क्या हम शुरू करें कल? जी जी ओके, सुनिए। ज्योति प्लीज कंटिन्यू. Yes, sir. So next guest we have is Professor Arun Divakar Nath Vajpayee. First of all, I would like to thank you, sir, to be present here despite your health. We wish you a soon recovery. So he is the Vice Chancellor of Atal Bihari Vajpayee University, Bilaspur. He has obtained his PhD in economics on study of acquisition and distribution of saving surplus agricultural lands in Jabalpur district, Madhya Pradesh from University of Jabalpur. His specialization is in the development economics, economic theory, spiritual economics. He has 37 years of experience in teaching and research. He has awarded with n numbers of awards. Some are Guru Vashishta Samman 2018, Maulana Azad Puriskar for Educational Upliftment, Divang Mehta Business School Award for Outstanding Contribution to Education, SRC Gold Medal for Excellence. He has also published 65 papers in recognized journals. He had presented papers nationally and also internationally. Sir, I would like to invite you to speak few words on our today's theme. Over to you, sir. Me, should I begin? Yes, sir. Okay, thank you very much for having enveloped me in this great webinar on national education policy. And I was rather very happy when you told that Pankaj Mittal, Alok Chakrawal, and many others have already contributed. And my intervention was scheduled at 2:30, but I was not well that time. So I requested you to just postpone my schedule, and you kindly acceded to my request. Philosophical foundation of national education policy. Actually, the philosophy in which national education policy has been prepared, it's our national philosophy. There are two types of philosophies. One our own India's philosophy, another Western philosophy. The Western philosophy believes in reductionist approach, separatist approach. They believe in too much of specialization in the name of separatism or reductionism. Western philosophy is disintegrated approach. Western philosophy is totally individual. And Western philosophy is more towards science and technology. Western philosophy is more based upon experimentation. So just contrary to it, the Indian philosophy is all holistic. It is integrated one. It does not believe in silos. It believes in cooperation. It believes in harmony. It believes in societal approach. It believes in community approach. It's more based upon realization. It gives full importance to social sciences, humanities, as well as science and technology. Here in India, we have been believing in Vedas. Ved means Gyan, complete Gyan. And Gyan cannot be segregated into different disciplines, whether it's a faculty-based, humanities, social sciences, law, management, like that, or maybe the subject-based. It's economics, sociology, mathematics, chemistry, physics, like that. Ved means Gyan. This Gyan has been received, perceived, conceived by our rishis and given to their disciples. Disciples were sharing that pool of knowledge to their disciples.
So this way the Shruti Parampara was established in India, and through Shruti Parampara, we have been preserving our knowledge. We preserve till death. So our indigenous knowledge has got great pool as such. We are in Vedas, we are in Puranas, Upanishads, Ramayana, Mahabharata, and great endowment of the Sanskrit literature. We are having greatest grammar expert like Panini. We have got yoga, Rishi Patanjali. Then other Shastra like Ayurveda. Descending downwards, we have Guru Granth Sahib. Then we have Kabir, we have Tulsi, we have Rahim, Ras Khan, and many other poets. And in today's world also, in our 20th century, we are having Premchand, we have Dinkar, and many others. It's a great legacy. So as I told you, that Indian philosophy does not believe in separation of time, nor separation of region, nor separation of individuals. It's all holistic. So our history is time immemorial. It doesn't believe in this ancient, medieval, or modern. But time you cannot divide into pieces. Time runs through in its eternity. You cannot say that this is discrete. This hour is discrete to the other one. This date is discrete to other one. Our time, moments, hours, days, nights, weeks, fortnights, months, years are just adjoining to each other. They cannot be treated for the sake of convenience. We say this, that, this day, that day, this month, that month, this year, that year, etc. But how can you preserve any year from other years? You cannot separate. So this is entire philosophy which we just see in our national education policy. The national education policy, we are talking about multidisciplinary approach that goes, that connects with our philosophy. That one particular subject is not complete on its own. It cannot help anybody to develop its personality. For personality development, he'll have to go and connect with other disciplines like that. So the multidisciplinary approach in our education has come very first time under this nature education policy. Before that, we have been talking about specializations as such, special disciplines like that, special faculties like that. That has been broken at the behest of our Indian philosophy, that person belonging to medical science too should learn about literature, music, Sanskrit, and many others. Similarly, persons belonging to humanities like those of Hindi, they must know something about chemistry, physics, mathematics, so that a completeness should come into the personalities of the individuals. That's the first philosophy connect this multidisciplinary approach. Second thing which I told you, that Indian philosophy does not believe in the discreteness of time as such. This first time in history we have come to know that school education is connected with the middle education, and a school middle education is connected with the higher education as such. Before that, no education policy could give that much dictum as such. School education should also be connected with the middle one, and middle education should also be connected with the higher education as such. We have been reiterating on this particular issue, that the quality of higher education depends upon the quality of middle education, and quality of middle education depends upon quality of school education, and quality of school education is also depends upon some sort of training either at home or some playway school like that. So this education policy, the Anganwadi
or many others, 3 years are to be devoted just to prepare the boy for the school. Then he will go to school, then he will transit upwards for the higher education as such. So that too is also has got our philosophy as such. And another connectivity which we are seeing in this education policy, this modern education, especially the Western education system, is more of formal nature. They have formulated this higher education as such. First of all, they created the trio of these coastal universities, that Madras, Kolkata, and Mumbai. Then they created another university at Allahabad, and fifth one was at Lahore. And almost all is a federal system which they were having in politics. That was created for education also. So many colleges were there and they were affiliated to these universities. Almost all colleges of India were affiliated to all these 4, 5 universities, only 5 universities only. What's this nonsense that you are creating a formal system and thinking that it's superior to that of informal system of education? India had a system of gurukuls. Gurukuls were they imparting not only these formal degrees, they were giving the complete training. And this education policy talks about 64 kalas, 64 kalas. India has been imparting education in 32 vidyas and 64 kalas. 32 vidyas, 32 faculties. You name any university in the world which imparts education, 32 faculties. None in the world. Even Harvard in these Ivy League universities also can't have these many faculty which India was used to impart. These 32 Vidyas and 64 Kalas, somewhere is being taught at the Gurukuls with the help of Gurus and the Shishas. And most of things are being imparted by the informal trainers outside those Gurukuls. So there was a combination, there was good compound of formal and informal education at that time. That too has been created as well included in this higher education and this national policy. Formal education is okay, but suppose some experts, maybe experts in law, experts in medicines, experts in yoga, experts in Sanskrit literature, or poets, or writers, literatures, or musicians, isn't it? Performing artists, if they are there in the town or somewhere, they should also be brought to the main teaching part as such. And similarly, that boy should also be given full freedom. If he wants to have 1 year certificate or 2 years diploma or 3 years degree, that too is possible. And suppose he wants to go and have some training outside the boundaries of the classroom, that opportunity should be given to that boy or girl whosoever may be. Begin. This is how formal and informal system is also being included in this nation education policy. So what I mean to say, this nation education policy is based upon, our own philosophy, Indian philosophy as such, and our own philosopher were great researchers. So in this nation policy, research has been given great impetus. For research, you don't require to go for MPhil as such. If you are having you have got those research component in your brain mind, then you can directly go to join research after BA only. So 1 year research BA and 2 years PG BA, 1 year research plus 1 year's PG. Those possibilities, those opportunities are given in this national policy. Not only this, then complete National Research Foundation has been created, because you know that Indians have been great researchers. They are innovators only. Nobody tries to emulate the others. Such type of fertile brain we are having with us. Only what we are lacking, we don't have sufficient facilities to translate our mind into experiments as well as to research papers. Like original thinking, there is no doubt about our originality in thinking as such. But due to lack of facilities, we are not. So National Research Foundation has been created for this particular objective only. We'll have many researchers, maybe from formal, maybe informal. Even a school teacher can also submit a research proposal. Higher education people can also submit a proposal.
Even persons in society, if they want to do something innovate, they can also see submit research proposal to this National Research Foundation. But there is a rider. The research should not be just for the sake of researches only. There are three main purposes that have been identified in this National Research Foundation. One, there must be some knowledge generation. If any research cannot generate knowledge, what hell you are going to do research as? That research should be stopped. We all know that most of the research on the PhD thesis, which we are just offering degrees to different students, they are doing nothing. They are just being shoved in cupboards and you see almirahs. Knowledge generation is the first object. Second, the research should be society oriented because our philosophy is not working for the individual knowledge, not for the sake of knowledge. Knowledge for the sake of development of society as such. It's a community oriented. Their National Research Foundation also says that it should try to solve the problems, try to dissect the problems of the society, then try to provide solutions to the societal problems. Maybe problems related to economy, society, technology, polity, whatever it may be. And we all know that society has got so many problems in Indian society. And third one, our researchers should be as they can provide some solutions to the states as such. We should help states in formulating the policies. These three main purposes are identified in National Research Foundation. So National Research Foundation also based upon our own philosophy. Another thing, we have been talking about global relationship. Vasudhaiva Kutumbakam is also one of the litmus tests for our philosophy. So this national education policy is not only believing in total confined to the boundaries of nation only, confined to the boundaries of India only. It tries to open its boundaries to Ivy League universities. Top 100, universities of the world can come, they can open centers where I have been criticized when I just advocate this case of Ivy League universities. Many a times people ask questions. They will say increase competition. They will increase competition by way of competition. Our university system may be ruined if we are having this Ivy League university. I just asked one question, very simple question. Our students are going outside India every year, and we see millions of dollars are just flowing out of India by way of remittances of our students joining these universities outside. Suppose if they are, and not only this, there are a lot of psychological trauma also they are facing by taking visa, going out and going away from their own families like that. If so, they are coming to our place, opening education system over there, and our students are going to join them. At it, that cycle, the trauma will not be there, and that outflow of resources will also not be there. Will be winner in almost all the cases if we are having those campuses. Something more I would like to tell you, then I'll close because I'm not feeling good today. In this system, we are talking about twinning of degrees, joint degree systems, and there are three concepts. We want to and dual degree systems, twinning of degrees, dual degree systems, and joint degree systems within the country and outside the country. If a boy is intelligent enough, he wants to go for his 2 degrees simultaneously. He can go. He can take the degrees by open systems as well as the classical system mode. He can have 1 degree over here and another degree outside India also, if time, resources, and everything permits to that particular ecosystem of that particular boy. So this is also based upon Indian philosophy like that. So what I mean to say that uh, our philosophy, number one, is not only utopia. दर्शन है ना हमारा, तो दर्शन जो केवल खाली पुलाव वाला नहीं है. हमारा दर्शन जो है वो फिलॉसफी से बहुत बड़ा है. Our philosophy gives a purpose to the life. Purpose to the life.
This is India only which has given the purpose to the life, and they have been, you see, combined in the Purushartha Chatushtay, Dharma, Arth, Kama, and Moksha. No country in the world gives purpose to the life. And if education a part of life as such, so education should also be purposeful. Well, before national education policy, no purpose was given to the education as such. This national policy gives purpose to the education. And the two purposes have been, you see, given. One, we should try to create a great, you see, manpower full of nationalism, patriotism, so personality development is concerned. And third and second, we want to create our education system as such. We should be globally competitive and establish ourselves as a global educationally superpower, which we call Vishwa Guru as such. And our philosophy doesn't believe any sort of artificial. So Matra Bhasha is also there. Within Matra Bhasha, we can do the things. With these, I close. I am sorry that my throat is bad and I am not that much organized today. Thank you, gentlemen. Thank you, sir. Though your health is not well today, but still, whatever the points you have mentioned through your lecture, it's really heart touching. And also, you have also raised that points what actually India have. And I hope that through this education policy, national education policy, India will also raise that kind of points and which we actually have to attain. And during the time of our ancient academic system, where the people will from the other countries will join. And definitely it's a part. You have mentioned 2 points. I just coined 2 points, that is the research perspective. And I have that through our institutions, you'll be happy to know that we have conducted several research activities as per our own individual way. Our faculties and their students have also gone through, and some of them are also getting recognitions through some Scopus Index, yeah, international recognized journals. Even one under consideration of one research paper, IMD Mausam Bhavan has signed MOU with us. Ministry of Jal Shakti worked with us. We are closely worked with the Ministry of Jal Shakti, urban ministries, and as well as academic institutions too. And through our institutions, we are also supporting number of students, almost I will say more than 80 students. We have already support them through research internship program. I mean, students has joined from the different universities in our institution. We will actually support them how to develop the research, how to develop the research ability and research paper publication. And they are right now, they are also very much interested and glad to participate sometimes. Actually, I would like to love to have some topics on which you are conducting researches or supporting researches, isn't Yes, it? sir. There should be some originality in research also, because mainly extending what has already been researched outside is in the West Yes, and publishing them in Scopus journals. That is not the ultimate purpose of education policy today. exactly. We should go for discovering our indigenous knowledge also, and also just to change the narrative of the higher education researches. I'll give one example. You see, Akbar is Mahan. आप अकबर की महानता के सारे उद्धरण लीजिए, सारे प्रकाशन लीजिए, सारे हिस्टोरियन बात कीजिए, भेजिए, छप जाएंगे आपको। अब प्रश्न उठता है कि अकबर महान थे? हेलो। हेलो, हाँ सर। आवाज आ रही है? हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अकबर महान थे। जहां आपने अकबर की महानता के बारे में सोचना शुरू किया, आप पाएंगे अकबर तो महान नहीं थे। अकबर महान नहीं थे, इसको लेके छापे किसी स्कोपस जर्नल में, कोई नहीं छापेगा। मैं आपको इशारा कर रहा हूँ। महान थे राणा प्रताप, महान थे शिवाजी, महान थे रानी लक्ष्मीबाई, महान थे रानी दुर्गावती, महान थे रानी चन्नम्मा, महान थे वो आदिवासी लोग जिन्होंने, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जिन्होंने प्राणोत्सर्ग किया। छापी हम नहीं छापेंगे। थोड़ा उस ओर भी इशारा मैंने इशारा किया है, इस तरफ भी कि हमारी सोशल साइंसेस में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है।
हमारा एक राष्ट्रीय समाज विज्ञान परिषद है, जैसा कि मैं भी फिर से अध्यक्ष चुन लिया गया हूँ परसों ही। तो उसमें हम लोग इन्हीं विषयों को लेकर काम कर रहे हैं। सुषमा यादव भी शायद है। सुषमा यादव थी उसकी अध्यक्ष, हाँ। हमने उन्हीं से अध्यक्षता ली है हमारे साथ Sir, में। यस प्लीज, sir, this is Suman Munshi. May I ask a question? व्हाई नॉट। Yes. सबसे पहले तो आप जैसे गुरु को प्रणाम, और आने वाले दिवाली के लिए हार्दिक शुभकामनाएं अपने सारे भारतवासी समेत आपको, आपके परिवार को। सर, आपने जो बात उठाई बहुत ही संगीन एंड सेंसिटिव इशू है। सेंसिटिव इसलिए है कि हम लोगों को अपने कला, अपने कीर्ति, अपने आदमियों को भूलने में बहुत प्राइड महसूस होता है। हम तो ये जानते हैं कि मार्टिन लूथर किंग ने क्या किया है, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कि अपने देश के लिए आजादी फौज ने क्या क्या बलिदान दिए हैं। हम तो ये भी नहीं जानते विक्रमादित्य जी ने कहां से कहां तक रूल किया था, और उसके नवरत्न सभा में कौन कौन है। हम तो सर ये भी नहीं जानते हैं कि अपना जो टाइटल है, वो टाइटल एक्चुअली किस गुरु के गुरुकुल में शिक्षा मिलने से हमारे पूर्वज को ये मिला था। तो ये जो भूलने की आदत है, ये दुनिया में विदाउट डिमनेशिया एमनेशिया हम लोग ने सुपर क्लास में ले गया है सर। तो मेरा समझने का यही मतलब, ये कहने का कि जितना जल्दी हम अपने आप को मुंशी जी, खोज कर ले, वो उतना अच्छा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, हम भूले नहीं हैं। हमारा जो अंगारा है ना, उसके ऊपर थोड़ी सी राख जमी हुई है, हमारे शीशे पर थोड़ी सी धूल जमी हुई है। बस अब जो वातावरण चल रहा है उसको हम हटा रहे हैं चीजों को। जो बात आज आप कर रहे हो 10 साल पहले नहीं कह सकते थे, आज कह रहे हो। हम कह रहे हैं हम 20 साल पहले नहीं कह सकते थे। तो ये चीजें सर, आ रही हैं और जबरदस्ती भुला दिया गया है हमको। हमको पीट पीट के जो है वो बनाया गया है। तो वो अब क्या है, चीजें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। तो मुझे लगता है समय ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक इस संदर्भ में एक छोटा सा बहुत पॉपुलर एक संगीत का मैं लाइन बोलूंगा। आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, मेरे अपने भी अपने होने की निशानी मांगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। सही बात, सही बात। सर ये जो जैसे मैं बता रहा था, ये रिसर्च के ऊपर हम जैसे काम कर रहे हैं, हमारे संस्था भी काम कर रहे हैं। तो आगे चल के इस रिसर्च को आगे ले जाने के लिए, जैसे हमने हाइड्रोपोनिक फॉग वाटर हार्वेस्टिंग, ये पहली बार एक रिसर्च का काम हम कर रहे हैं जो फॉग। चलिए हम लोग बाद में बात करते रहेंगे, है ना? ओके, We should close. It's already 4 hours. ठीक है सर। तो या ज्योति, Thank you. ज्योति प्लीज। Yes. Thank you so much, sir, for your words and your efforts. Despite your health, you are with us, sir. Really means a lot. So let's proceed further to sum up this today's successful program. For that, I would like to invite Vijay Roy Chaudhary, sir, the chairman of SAIARD, to propose a vote of thanks. Over to you, sir. Thank you, Jyoti, and thank you, first of all, Professor Bajpai sir, and also the another Vice Chancellor, Professor Alok Chakrawal ji, Professor Sanjeev Sharma sir, and Dr. Pankaj Mittal sir for joining today as the resource person for this National Symposium of National Philosophical Perspective of National Education Policy. It's really very interesting as well as resourceful discussions. From last 3 days, we have organized this event, and there are several vice chancellor, eminent personalities have joined either from the as a resource person sector as well as the panelists of the participants. And through their discussions of their discussions, it's really helpful for us, particularly for our students, our upcoming generations, to know about the different perspectives of national education policy, what are the different outcomes and different advantages they will get, and also what are the different kind of opportunities they can avail after the application of this national education policy in coming days. And lastly, what Professor Bajpai sir has already mentioned, that it is actually through this implementation of this national education policy, we the Indians actually will be able to know what our India actually is, and hopefully through this we will also gain the same tradition, the same
spiritual perspective, the same cultural aesthetics, and on the basis of that we can feel a proud on us that what we have, there is nothing in other parts of the world, because the whole world is come one time, the whole world was coming to came to learn from India, and still now they are doing that. And now this is the time to help to learn the world and to teach the world through this after the implication like national education policy. So I am really thankful on behalf of our institution. I heartily thanks to all the delegates, all the resource persons once again, and also the other participants, those who have joined from the different corners, and along with our team members. So, and Jyoti for coordinating this program since the last 3 days. So thank you, sir. Most welcome. Vande Mataram. Jai. Namaste to all.